This October, I'm planning to drive a rickshaw 7,000 kilometers across India, 17 states, 70 days, and with your support, I'm creating an 8-part documentary series to explore the people, rituals, and stories behind chai. But I can't do this alone. This journey only happens if people like you help bring it to life. Because this isn't just a trip, it's about documenting the people and lives that gather around chai. The farmers, the chaiwalas, the families and communities. Earlier this year, I traveled across India on a short research trip, just 5 days in the country, and even in that short time, I came across stories far deeper and more varied than I expected. This film is a glimpse of the kinds of stories we will share on a fully documented journey. When many people in the West hear the word chai, they think of a flavor, maybe something sweet, maybe something from a cafe menu. But traveling through India, you realize very quickly that chai is doing something bigger. It creates pauses, it opens conversations, it sits inside everyday life in completely different ways depending on where you are. And through those moments, you begin to understand something deeper. Not one single story of India, but the depth, diversity, and complexity of life across it. Because outside South Asia, chai is often reduced to a flavor, a trend, or a product, detached from the people, rituals, and histories that gave it meaning. So we start our journey in Delhi, a city shaped by centuries of empires, migration, and reinvention. Like Delhi itself, chai is shaped by the people who passed through it. And today, it's one of the most vibrant chai cities in the country. Because behind every cup of chai in this city, there's a story. And one of the best ways into Delhi is to meet the chaiwalas who serve it every day. First, we meet Anita. She moved from Uttar Pradesh for better opportunities, and today she runs her own chai stall on the streets of Delhi. For Anita, chai isn't just a drink, it's independence. गौरी तेरी चाय ठंडी हो गई। ये तो है क्या? हाँ, मेरा अनीता कश्यप नाम है। चाय का काम करते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं। What does chai mean to you? चाय तो सबसे बड़ी है। चाय सबसे बड़ी है। और क्या? चाय बिना तो गुजारा ही नहीं है। 1990 में आए थे, पहले हम रफोजी मार्केट। हम ये सोचते हैं कि कस्टमर को अच्छी सी अच्छी चाय मिलनी चाहिए। सबसे स्पेशल इसमें अदरक और मसाला है। अदरक और मसाला। उससे थोड़ा सा वो होता है, जैसे गले में खराश वगैरह, तो ये मसाले डालो, इससे ये परेशानी नहीं होती। That is genius. सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। मंदिर मेरा ये है, से अपनी देवी की यहीं पर जोत जलाते हैं। सबसे सुबह पहले जब हम चाय बनाते हैं तो सबसे पहले माता रानी का भोग लगाते हैं, उसके बाद फिर हम कस्टमर को देते हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ। सबसे मैं अलग हूँ, अपना काम घर का भी बाहर का भी आना जाना मैं खुद करती हूँ। मैं किसी के पास नहीं वो मतलब नहीं, बेटे के साथ रहना नहीं चाहती हूँ मैं। बेटा दारू पीता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं अलग ही सेट हूँ। नहीं, ज़रूरत की क्या ज़रूरत है जब अभी हाथ पैर चल रहे हैं। चाय की वजह से ही हम कामयाब हैं, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। Delhi is full of characters like Anita, people whose lives are woven into the rhythm of the city through chai. Every stall tells a different story, every cup carries a different tradition. Next, we meet Sudama in the college campus. His customers say he serves the best chai in Delhi. Why is it famous? They are using so many like mint leaves and rose leaves, so yes, it actually tastes so good and it is very famous, and not only in the North Campus but also in India as a whole. And after tasting his famous rose, tulsi and cardamom chai, it's not hard to see why. हम बचपन से बेच रहा हूँ, बचपन से 12 साल की उम्र से। पापा दादा सब ये मेरे जाती है। काम करते करते आपको नॉलेज होता है, जितने काम करेंगे उम्र गिरते आदमी का पता लगता है मेरे गलती सलती चाय में क्या कमी है क्या, तो आदमी का नॉलेज बढ़ते जाता है। अदरक, काली मिर्च, लौंग, तो फिर चाय का मज़ा कुछ और है। चाय टी चाय पीने के बाद आपको चॉकलेट का टेस्ट आएगा, कलर उतनी ही आएगा जितना इसमें है। एक खुशी होता है, एक शरीर में उमंग होता है, जल्दी देना। हाँ,
ये होता है। हम तो चाय 1 हफ्ते तक रह जाएंगे। चाय मुझे चाहिए, कम से कम 20 चाय डेली। 20 cups of chai per day? Wow. Ah. What does chai mean to you? Chai is like, for me, it's a kind of medicine. Is this the best chai in Delhi? Yeah, obviously. Without doubt. Yeah. What struck me most about Delhi was how creative chai can be. It's not one recipe, it's thousands, each one shaped by the people who make it. Next, we meet Arshid, originally from Kashmir, serving a very different kind of chai. No sugar, but a rich, savory butter chai that warms you from the inside out. हम कश्मीर से आते हैं यहाँ 4-5 महीने के लिए। तो बहुत पहले तो बहुत परेशानी होती थी, क्या दूर था। हाँ, घर से दूर है, अभी 700-800 किलोमीटर घर से छोड़ के जाते हैं, तो उन्हीं के लिए, बच्चों के लिए ही जाते हैं। कश्मीरी वाजवान लेके, क्योंकि यहाँ जो कश्मीरी आते हैं उनको यहाँ का फूड ज़्यादा नहीं पसंद आता है, तो कश्मीरी फूड ज़्यादा पसंद आता है। पूरा प्राउड हो जाता है कि हमने कश्मीरी यहाँ पर कल्चर 96-97 हाँ, 96-97 नून चाय। पहले नून चाय को, जो चाय पत्ती होती है, जो आपकी मीठी चाय होती है, वो छोटे छोटे दाने होते हैं। नमकीन चाय बड़े दाने होते हैं। ये आसाम से ये आती है, लेकिन ये कम से कम 4-5 घंटे फिर पहले बॉईल करनी पड़ती है। फिर उसके बाद इसको हम दूध मिला के और बटर डाल के बना लेते हैं चाय। फिर वो बन जाती है पिंक, तो गला साफ़ हो जाता है और दिमाग भी क्लियर हो जाता है इससे। कश्मीरी ज़्यादा प्रेफर करता है नमकीन चाय। तो फिर जब हमने यहाँ आए तो फिर नमकीन चाय भी साथ लेके आए। अभी आपने देखा ही होगा, अभी बना ही रहे थे तो कस्टमर आने लगे। अजमेर का वो उर्स लग जाता है वहाँ, उस टाइम कश्मीरी बहुत सारे आते हैं यहाँ। It makes everybody in the Kashmiri community feel at home. हाँ, Yeah. कश्मीरी टी a must. A must. जब भी मैं नून चाय पीता हूँ लगता है घर में पहुँच गया। In just a single city, we met 3 completely different chai traditions, 3 completely different lives, and it reminded me that chai isn't just about the ingredients, it's about the people. Across India, every family has their own way of making chai, their own spice mix, their own rituals. But if you want to understand what really makes a great cup of chai, you have to go further back to where those ingredients are grown. So we travelled nearly 1,500 miles south, all the way to Kerala, a place locals proudly call God's own country. Kerala has been at the centre of the global spice trade for hundreds of years. Traders once crossed oceans to reach these hills. Today, those same spices continue to shape chai across India. Cinnamon, black pepper, cardamom, ginger. But what we found here wasn't just incredible ingredients. It was a completely different way of growing them. At first glance, these farms almost look like a jungle. But look closer and you start to see something extraordinary. Oh yeah, I know that taste. A living, breathing ecosystem where spices are grown together with nature, not against it. We came here to understand what makes great chai at its source. And that meant spending time with farmers growing its ingredients in a way that works with the land and protects its biodiversity. Because they aren't just producing spices, they're protecting a way of farming that has existed for generations. Because every cup of chai starts long before it's brewed. ഞാനൊരു 10-35 കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ കൃഷിക്കാരായിരുന്നു. വായു മലിനീകരണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനിക് ആയത് ചെയ്യണ കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മണ്ണ് എപ്പോഴും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായിരിക്കും. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം മണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മണ്ണാകുമ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഇംഗ്ലീഷ് രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല, കെമിക്കൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ലാത്ത കാരണം. എൻ്റെ പേര് ജിനോയ് ജോസഫ്, എൻ്റെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേര്. രാസവളമിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു, ഇപ്പം ഓർഗാനിക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർഗാനിക് പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിനകത്ത് റിസൾട്ട് അല്ല, വളങ്ങൾ ഇടുന്നതിനേക്കാളും ഉൽപ്പാദനം കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ ക്വാളിറ്റിയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്മുടെ ലാൻഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ബെസ്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനിക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് രക്ഷയും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് നമുക്കത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനിക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തും അതുപോലെ നന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പണ്ട് വരുന്ന പോലെ അത്ര അസുഖങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആർക്കില്ല. നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനിക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് രഹസ്യം. But to understand why these farms are grown this way, we spoke with someone helping lead a different future for agriculture in the region, Tommy.
from the Fair Trade Alliance, Kerala. What should actually human beings be prepared to spend on food? The food budget of the average middle class family is actually a fraction of what it ideally should be. The problem with that is producing fast calls for efficiencies that do not align with the rhythms of a farm. Any of your spices, ginger or turmeric, takes 12 months. You can't speed up that process. One unseasonal rain and your crop is wiped off. A monocrop farm is chasing quick returns. A homestead farm is anchored on stability. I can take that blow in my stride because I have 15 other crops. Biodiversity is about increasing crop diversity of the land, getting organically grown spices, extreme good quality. But this product also has a social quality to it. It has an environmental quality to it. You're basically saying this product has also investment in your children. Your purchase decisions actually count. So each time you're in a store, you're buying food, you're actually voting with your shopping bag for the type of world you actually want for yourself and your children. Every time I come back from these trips, I feel so inspired to continue your mission, our mission. In just 5 days, we met incredible people, visited extraordinary places, and came across stories I had never heard before. Stories about farming, about resilience, and about the deep connection between people and the land they work. And all of it opened up through something as ordinary and as loaded as a cup of chai. But 5 days is only the beginning. Imagine what might emerge from following that thread across a much bigger journey. And that's why this journey matters. Because behind every cup, there are people, traditions, and stories that often go unseen. This journey is about listening more closely to the people who grow tea and spices, to the people who make chai, and the many different communities that gather around it. So this October, I want to travel across India in a rickshaw. 7,000 kilometers, 17 states, to follow those stories further. If this journey speaks to you, I'd love for you to be a part of it. Because chai may not explain everything, but it can be a way in.